Honorable Deputy Speaker, sir. Sir, I take the opportunity to speak on the second batch of 10 demands covering higher and technical education, sports and youth services, medical and health, municipal administration and urban development, labor and employment, religious endowments, forest and environment, tourism and cultures. Honorable Deputy Speaker, sir. Sir, I would like to bring to your kind notice a very important issue. This is regarding tabling of demands. Sir, I'm sorry to say, sir, all the demands, 10 demands, were not tabled yesterday, and last night at 12 o'clock, I received these demands, set of all the demands, at my residence. Sir, isn't it very sad that without demands being tabled and without the members going into the details and having a proper study, how can we come and participate in this demand, sir? Sir, it is very sad. This is a very important thing, and I hope next time it will be made sure that the demands are tabled. Because to have a healthy discussion, we need to have a proper study. Like all these times I'm trying to just study, and I think for the first time I have come without really going into the details, superficial information, whatever I have. I'm trying to just gather them and put it across, and hoping that I would get some replies. So starting with school education, sir. Education Minister Sahiba has pointed out in the note of demand and the outcome budget for the school education for the financial year, for the year 2022-23, that a new scheme, Mana Uru Mana Badi, in rural areas and a Mana Basti Mana Badi in urban areas has been launched. She has also explained that to develop the government schools across the state, the scheme has been formulated with an outlay of 7,289 crores. Honorable Deputy Speaker, sir. Sir, in the first phase, a mandal is taken as a unit and 12 different types of works are being taken up in 9,123 schools with an outlay of 3,497 crores. I may recall here that the Finance Minister Saab in the state budget for the year 2021 and 2022 has announced the introduction of a new scheme for education with an outlay of rupees 4,000 crores, and a budgetary provision of rupees 2,000 crores were made in the year 2021 and 22 for providing basic facilities in all the government schools on a large scale. Sir, under the scheme, the government would take up construction of new buildings for schools located in rental premises, repair of school building and provision of necessary furniture, toilets, other facilities, including use of digital technology in the classroom. I do not know how the same scheme can be launched twice, in the current year as well as in the next year. Sir, I can say that unnamed scheme of 2021 is now named as Mana Uru Mana Badi, and it has been launched by the Honorable Chief Minister Saab in Vanpatri earlier this week, sir. Honorable Deputy Speaker, sir, in the current year itself, the government has decided to allocate rupees 2 crores each from CDP funds of rupees 5 crores for this scheme. The contribution of CDP funds by the legislatures, thus 160 legislatures, thus comes to rupees 320 crores. I would request
that in the 16 mandals in Hyderabad district, all the government schools should be taken up in a first phase itself, as these schools are in very bad shape and lack of basic amenities. And when I make this demand, I have also heard Honorable Education Minister Sahiba saying that the enrollment in government schools have increased. Almost 3 lakh more students have enrolled when she was speaking. So when the students have increased, so it's obvious that the infrastructure also requires to be increased. The teaching staff also requires to be increased. And the increase is the reason of COVID and post-COVID, I would say. Because of COVID, many people have lost their livelihoods, and because of various other reasons, the economic condition have really come down, and the poor parents were forced to take their students out from the private schools and get them enrolled or get them admitted in the government schools. Sir, when there is one issue which needs to be addressed, sir, what is happening? Like I'm giving an example. One child was studying in a private school, and because of the economic distress and economic slowdown and loss of job, the parent of that student was forced to get the student admitted in government school. And when that student is going for an admission in government school or any residential school, there they are asking and demanding for a TC. And the private schools are not giving the TC, saying that first you clear the fees is due, then we will give you the TC. So what is happening is that, sir, in this, it is like we are forcing a child to drop out from studies. This is a very important issue, and I hope that the Ministry of Education will make a note and Honorable Minister will intervene and give clear instructions to all the private schools that if any student wants to discontinue from any private school and taking an admission in government school or residential schools, no TC should be asked. They should directly be admitted in government schools without a TC. This is a very important issue which I am bringing to your notice, Honorable Deputy Speaker, sir. Sir, going further ahead, sir, according to a government survey, as many as 9,997 additional classrooms are required. 8,725 schools have to be provided with compound wall. 9,000 schools need latrine and so on. Sir, now again my question is, when we have prepared this requirement, have we taken into consideration the increased number of enrollment which has come in the government schools? Or these figures are the old strength of the students? This needs to be clarified when Honorable Minister is going to give me a reply, sir. Sir, at the same time, I welcome the announcement made by the Chief Minister, Janab KCR Saab, in the Assembly on recruitment to be taken up in the state government department. Honorable Deputy Speaker, sir, a total of 91,143 posts are going to be filled across all departments and states, including regularization of services of 11,103 contract and outsourcing employees, and direct recruitment to fill up 80,039 vacancies. So over 26,500 vacancies of 91,143 are in the secondary and higher education department. And the figures include 5,500 contract and outsourcing posts and 20,964 direct vacancies. The direct vacancies again include 13,086 in secondary education
and 7,878 in higher education department. Honorable Speaker, sir, through you, I request the government to ensure that all these vacancies in education department are filled up in a time-bound manner during the course of the next academic year. So the government has also initiated measures to introduce English medium in all government schools in states so that the poor students in these schools get opportunities on par with their counterparts in the private and corporate schools. While welcoming this move, we demand that Urdu should be offered as a second language to all the students whose mother tongue is Urdu, sir. ये बहुत जरूरी बात मैं आपके जरिए हुकूमत की तवज्जो हासिल करना चाह रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे उठाए गए इस मसले पर हुकूमत न सिर्फ संजीदगी से गौर करेगी बल्कि अपने मादरी जबान में तालीम हासिल करने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए उनको सेकेंड लैंग्वेज उर्दू देगी. और and sir, after the formation of Telangana state, the number of residential schools for the weakest section has gone up from 298 to 973, including the residential schools open up for the minorities and backward classes. For this, I need to congratulate it to Urdu junior colleges and the teaching staff, the issues related to Urdu degree colleges and the post. I would like to bring across to you the DSC, the de-reservation, which we were demanding. And at the same time, as strict as mandatory for teacher recruitment, the government is arranging to conduct the qualifying examination, but the state government is not conducting TET examination since the last 4 years. We request the government to conduct the TET examination at the earliest to fill up all the vacant teacher posts in Telangana. There are 12,500 students doing D.Ed courses and 15,000 students doing B.Ed courses. About 1.7 lakh D.Ed diploma holders and 1.7 lakh B.Ed graduates are waiting for TET TET exams. Sir, intermediate, there are 405 government junior colleges with 1.96 lakh students under the Board of Intermediate Exam Education. According to the note of demand for higher education for 22-23, there are 6,008 sanctioned junior posts, out of which only 746 are working and 5,262 are vacant. That means 87.58% is vacant. This is a very serious matter which needs to be looked into. Hence, 3,584 contract faculty and 194 minimum time scale junior lecturers are working against the sanctioned post, and for the remaining 1,484 vacant posts, guest faculty is engaged. Now going towards higher and technical education, so far as higher education is concerned, two issues are awaiting an early decision by the government. The first issue relates to the proposal of the raising the retirement age of university teachers and government degree college teachers to 65 years. And the second issue pertains to the agency for recruitment of the university and degree college teachers, whether it could be done by the Telangana State Public Service Commission, the Telangana State Council for Higher Education, or a new recruitment board to be constituted for the purpose. I have made the same issue raised when I was speaking on budgets also, sir. But Honorable Finance Minister had not replied, and I hope that Education Minister would give me this, the reply for this. I request the government to decide on these two issues immediately so that the vacancies in higher education department are filled up in next academic year. Honorable Panel Speaker, sir, in May 2021, the state government has appointed Vice Chancellor for 10 state universities. But once again I say, not a single VC from the minority community was appointed. Also, since the inception of State Council for Higher Education in undivided AP and formation of Telangana State Council for Higher Education, not a single member of minority community was appointed as Vice Chairman or the Chairman of the Council. Why?
Honorable panel speaker, sir, through you, I would like to bring to the kind notice of the government that for Telangana State Council for Higher Education, kindly nominate a member of minority community and also appoint a vice chairman or a chairman of the council. This will give a good sign and a signal that this government is a minority friendly government. And I know that कि ये मुस्लिम दोस्त हुकूमत है, माइनॉरिटी दोस्त हुकूमत है, गरीब दोस्त हुकूमत है, किसान दोस्त हुकूमत है और नौजवान दोस्त हुकूमत है, हर एक की दोस्त है. इसलिए तो हम भी आपके दोस्त हैं. लेकिन हम चाहते हैं कि एक एक रुकन अगर इसमें अगर डाल दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है आपके लिए. कौड़ा रुपये देने की बात नहीं कर रहा हूं, एक रुकन देने की बात कर रहा हूं. दे दीजिए, एक अच्छा पैगाम जाएगा इससे. सर, and I also request the government to nominate a professor from the minority community to either chairman or vice chairman of the post. State universities have also not got the adequate funds from the government. Sir, the 8 existing general universities are allocated rupees 678.88 crores in the next year's budget. Sir, through you, I also would like to bring to the kind notice of Honorable Minister KTR Saab. Yesterday, students from IT Basar had come and met me and spoken to me repeatedly on my phone, and they requested me to raise the issue of IIT Basar. They do not have a VC there. The food is very bad. The living conditions are very bad. All the students came to me and they were requesting, Akbar Saab, kindly raise the issues regarding. I will give one detailed letter to you, sir. Through you, sir, I request Minister Saab to kindly look into that. A representation has been received. People come with lot of hope to us and they request us to raise. That is the reason why IIT Basar issue, खाने में कीड़े निकल रहे हैं, वीसी नहीं है, उनके हॉस्टल में फैसिलिटीज नहीं है, नैक का एक्रीडेशन उनका नीचे हो गया. They were requesting, kindly I request you to look into that, sir. Sir, at the same time, sir, out of 1,268 sanctioned teaching posts in Usmania University, there are now only 415 regular faculty. I hope that these vacancies will be taken up. Honorable panel speaker, sir, when I speak about Usmania University, I would like to come on record and say that Usmania University is also on Waqf land, sir. With all responsibility, I am saying, sir. So in the earlier budget session, I had given the court judgments also. I have given the details. I have given the judgment of the revenue department. Then when it was appealed further, the high court judgment also I have given. But the state now is that, sir, Usmania University have locked all the roads which leads towards the Muslim graveyard, which leads toward the Muslim प्रेयर मॉस्क मस्जिद को जो रास्ता जाता है बंद कर दिए, खबरस्तान को जो जाता है बंद कर दिए, सारे रास्ते बंद कर दिए वीसी साहब. सर, मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करना चाहता हूं, रास्तों को खोल दीजिए. सर, my colleague, my MLA Mr. Ahmed Pasha Khadri Saab had gone there. He had met the registrar also Usmania University. रास्ते बंद कर दिए ना पाशा कादरी साहब, मस्जिद का रास्ता बंद करें, दरगाह का रास्ता बंद करें, खबरस्तान का. काइंडली गिव इंस्ट्रक्शंस टू ओपन दैट उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जो रास्ते बंद करे हैं. सर, गोइंग फर्दर एट फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट टू मेडिकल एंड हेल्थ, सर, आई कांग्रेचुलेट द तेलंगाना गवर्नमेंट according to the health index report titled the Health States Progressive India report on ranks of state and union territory. The state improved from its previous 4th rank to be placed 3rd on the overall health index for the year 2019, sir. I congratulate the Telangana government for that. Sir, Telangana overall performance as well as incremental performance on various parameters put it in the 3rd place among larger states behind Kerala and Tamil Nadu. While for medical and health, rupees 5,000
707.50 crore allocated in financial year 2021 and actual expenditure account was 5,944.69 crore. Additional expenditure was rupees 227 crores and rupees 5,816.52 crores were allocated in revised budget in financial year 2021-22. The allocation has been raised to rupees 10,711 crore in the budget for 22-23, marking a substantial increase of rupees 4,894 crores in the share number, sir. So the breakup of the proposed allocation is rupees 5,743 crore under scheme expenditure and rupees 4,968 crores under established expenditure. It's a welcoming sign that the health sector has got a much needed boost, with budget allocation for the financial year 22-23 being 78.5% more than the current fiscal year, even as Telangana government seeks to build a robust healthcare network across the state, sir. Sir, for 22-23, the allocation has been increased for various schemes under the scheme expenditure. Rupees 1,000 crores for construction of medical colleges and hospital and rupees 1,000 crores for construction of super speciality hospital. The allocation for these two categories in current fiscal year was almost zero. The allocation has been increased for purchase of surgical consumables, diagnostic reagents and disposables. The allocation for the National Program for Prevention and Control of Cancer and Diabetes and Cardiovascular Disease and Stroke has been raised from only rupees 5 crores in the current financial year to 308 crores for the next year, sir. I congratulate the government for this, for increase, sir. So the scheme expenditure for primary health centers under Director of Public Health did not see any increase, and it was the same case with the allocation for prevention of control of diseases. Honorable panel speaker, sir, बार बार कई मर्तबा मेरी पार्टी की जानिब से मैं उस्मानिया हॉस्पिटल का मसला उठाता रहा हूं। मैं आपके जरिए हुकूमत से फिर से अपील करता हूं, चीफ मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं, दरखास्त करता हूं कि आप शहर के चारों तरफ आप हॉस्पिटल्स ले रहे हैं, चारों तरफ ले रहे हैं, आप उस्मानिया दवाखाने को भी ले लीजिए। उस्मानिया दवाखाने में खुली जमीन है, आप टावर्स बना सकते हैं, हॉस्पिटल्स बना सकते हैं। पुराने शहर में भी, साउथ ऑफ हैदराबाद में भी एक दवाखाने को लिए वैसे होगा। आप खुला जो है मैदान उसमें ले सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, उस्मानिया दवाखाने को नजरअंदाज मत कीजिए। और दवाखाने जो बना रहे हैं, हम इसका इस्तेकबाल करते हैं, तो साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि फ्रूट मार्केट, जो फ्रूट मार्केट है, जो फ्रूट वेंडर्स हैं, जहां पे अपने फ्रूट्स को बेचते थे, वहां पर आज एक दवाखाने का संग बुनियाद रखा जा रहा है और उसके बाद में कहा जा रहा है कि दूसरी जगह पे उनको शिफ्ट किया जाएगा। तो मैं पैनल स्पीकर साहब आपके जरिए महमूद अली साहब से, केटीआर साहब से और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से कहूंगा, दवाखाने की तामीर के खिलाफ नहीं है। मैंने एक प्रपोजल चीफ मिनिस्टर साहब के सामने लास्ट सिटिंग में रखा था कि फ्रूट मार्केट को आप वक्फ बोर्ड की जमीन पर ला लीजिए। मैं अभी भी कह रहा हूं, आप नई मार्केट बनाइए, जरूर बनाइए। मैं सारे फ्रूट वेंडर से लिखाकर दस्तखत करा कर देता हूं कि जैसे साल 2 साल में फ्रूट मार्केट तामीर हो जाएगी, वो वक्फ बोर्ड की जमीन से नए फ्रूट मार्केट में चले जाएंगे। लेकिन आज वो लोग रोड पर हैं, कई खानदान मुतासिर हैं। हमदर्दी के साथ इस मसले को देखिए। जरूर मैं कहूंगा कि दवाखाना आना चाहिए। हाई कोर्ट का ऑर्डर भी उनको मिला, लेकिन उसके बाद भी डिमोलिशन हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वहां पे दवाखाना नहीं बनाइए, बिल्कुल बनाइए। दवाखाना जरूरी है, लेकिन इन गरीबों का भी सोचिए। ये फ्रूट वेंडर्स परेशान हैं, आम का सीजन है, उनके फ्रूट, उनके आम रोडों पे बेच रहे हैं बेचारे गरीब, और वो बेच रहे हैं तो पुलिस वाले आके उनके फ्रूट्स को सीज कर रहे हैं और उनको चालान दे रहे हैं। सर, मैं कह रहा हूं कि 30 एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन है। हम महमूद अली साहब और हम मिलकर वक्फ बोर्ड से
टेम्पररी मार्केट के लिए अलॉट करते हैं। गवर्नमेंट अगर पैसा नहीं खर्चना चाहती है तो ये फ्रूट वेंडर्स अपने पैसों से टेम्पररी मार्केट बनाने तैयार है। आप सिर्फ इजाजत दे दीजिए, आप सिर्फ इजाजत दे दीजिए। जमीन भी है, टेम्पररी बनाने के लिए भी वो तैयार है, नई मार्केट बनने के बाद जाने को भी तैयार है। और भी अगर कुछ है आप जो चाहते हैं बोलिए, वो भी उनसे बात करेंगे। लेकिन आप जहां पे बैठो बोल रहे हैं, वहां नहीं बैठ सकते, वहां कारोबार नहीं हो सकता, रोड तंग है, वहां पे पूरा फ्रूट मार्केट खत्म हो जाएगी। और फ्रूट मार्केट की वजह से गवर्नमेंट को भी पैसा आता है। काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमदर्दी के साथ फ्रूट मार्केट का भी देखिए, उस्मानिया हॉस्पिटल का भी देखिए। मिनिस्टर साहब हरीश राव साहब हैं, मैं फिर से दरखास्त करता हूं कि उस्मानिया हॉस्पिटल को लीजिए, उस्मानिया हॉस्पिटल को भी बनाइए। निजामिया तिबी कॉलेज का आपने दौरा किया, आपका शुक्रिया साहब, मिनिस्टर साहब का। निजामिया तिबी कॉलेज और यूनानी हॉस्पिटल को जो चीजें थी हमने आपको दी, उसमें से बहुत सारी चीजें हुई हैं। बिल्डिंग रेनोवेट करने के लिए भी मैं आपके जरिए दरखास्त करूंगा। और उसके साथ ही साथ पैनल स्पीकर सर, थ्रू यू आई वुड लाइक टू मेक अ सबमिशन एंड अ रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहब। Sir, we had appointed on contract basis in Telangana Institute of Medical Sciences few employees. Their contract is ending on 31st of March. We need to renew their contracts. All the staff working, their clinical and non-clinical staff have made a representation asking the government to regularize their services. Yeah, please, please. भैया उसमें वो टिम्स हॉस्पिटल का क्या है, पहले अपन जल्दी में जब कोरोना के टाइम पे टू टेक केयर ऑफ द कोरोना पेशेंट्स, अपन कोरोना के लिए वो हॉस्पिटल खुल चुके हैं। अभी कोरोना खत्म होने के बाद उसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं गवर्नमेंट। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए यू नीड थिएटर्स, आप तो सब जानते हैं। सो उसके तरीके से आईसीयू वार्ड्स सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट वाइज बनाना चाहिए। जब कोरोना के लिए जल्दी जल्दी बेड्स डाले, ऑक्सीजन का लाइन डाल के अपन हॉस्पिटल खुले। अभी गवर्नमेंट ऑनरेबल सीएम वांट्स टू मेक टिम्स एज ए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सो रिसेंटली वी हैव कॉल्ड द टेंडर्स, उसको जल्दी हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। सो मीनवाइल हॉस्पिटल को बंद नहीं करते हुए एक 2-3 फ्लोर में ओपी चला रहे हम। वो जैसा हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर्स एंड अदर फैसिलिटीज होते हैं, वो टिम्स को पूरी तरीके से निम्स जैसा उसको अच्छी तरीके से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाते हैं। सो मीनवाइल गवर्नमेंट का आइडिया क्या है, उसमें हम परमानेंट एम्प्लॉयज को लेना चाहते हैं। जब कोरोना के टाइम पे टेम्पररी के लिए द ऑर्डर इटसेल्फ गिवन सेइंग दैट यू आर टेकिंग इन ए टेम्पररी बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, बट जो सर्विसेज उन लोग दे चुके हैं उसमें हम देखते हुए गवर्नमेंट ये डिसीजन लिए, जो टेम्पररी बेसिस में जो एम्प्लॉयज को हम ले चुके हैं उन लोगों को परमानेंट रिक्रूटमेंट में वेटेज दे के वी वांट टू मेक देम एज ए परमानेंट एम्प्लॉयज। सो गवर्नमेंट विल गिव सम वेटेज so that they can be selected as a permanent employee. So we are not closing TIMS. TIMS, we are making it as a super specialty hospital. TIMS, we want to recruit permanent employees, specialized and qualified employees को हम recruit करना चाहते हैं। जो लोग कोरोना के टाइम पे टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए रिक्रूट कर चुके हैं, उन लोगों को भी वेटेज देके परमानेंट बेसिस में हम लेने के लिए we will extend all kinds of cooperation and will extend वेटेज मार्क्स। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर साहब। मैं यही कहना चाहता हूं कि कोरोना के वक्त, बुरे वक्त, जरूरत के वक्त लोग आगे बढ़ के अपने सर्विसेज दिए। अब कोरोना खत्म हो गया तो हम उनके सर्विसेज को खत्म ना करें और उसको किस तरीके से हम एकोमोडेट कर सकते हैं उसको भी देखना चाहिए। नहीं तो एक पैगाम ऐसा जाएगा कि जरूरत के वक्त हमारा इस्तेमाल हुआ, जरूरत खत्म हो गई और हमको फेंक दिया गया। ऐसा ना हो, इसके लिए मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। सर, पैनल स्पीकर सर, इन द चीफ मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट ऑन रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज हेल्थ एंड मेडिकल फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट इज शोन एज 12,755
However, the total vacancies are 20,048, including the post against which outsourcing and contract staff are employed. Moreover, the sanctioned strength of Medical and Health and Family Welfare Department, according to Appendix A to the Budget Estimate 22-23, Volume 8/1, on employee strength of government department is 55,739 in 22-23, as against 48,981 in the current year of 21-22, indicating an increase of 6,758 posts, mainly in Director of Medical Education, in view of the opening of new medical colleges and new teaching hospitals. I understand this. Sir, I would like to know from the Finance Minister, Sahab, who is also the Health Minister, whether in computing the direct recruitment vacancies to be filled up as per the CM Saab statement, these new posts have been taken into consideration or not? This is very important. अगर आप पुराने वैकेंसीज को ले रहे हैं या नए कॉलेजेस के बाद में जो नई जरूरत होगी, जैसे मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के ताल्लुक से भी कहा कि ओल्ड रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट टू द न्यू रिक्वायरमेंट्स, तो वो उन चीजों को ले रहे हैं नहीं। और बस्ती दवाखानों के लिए मैंने पहले भी मुबारकबाद दी थी हुकूमत को, दोबारा मुबारकबाद देता हूं। डायलिसिस सेंटर्स के लिए मुबारकबाद देता हूं, और जो लैब्स जो खोल रहे हैं इसके लिए भी मैं हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं। मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया था और कहा था कि पुराने शहर में आप डायलिसिस के और सेंटर्स को भी लाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहब जरूर इस पर भी गौर करेंगे और नए डायलिसिस के सेंटर्स ओल्ड सिटी में लाएंगे, और नए इन्वेस्टिगेशंस जो करते हैं उसके लैब्स भी आप लाएंगे। मैं फिर से आपसे मुतालबा करूंगा कि आरोग्यश्री के कार्ड्स 2014 में दिए गए थे, नए कार्ड्स नहीं दिए गए। आरोग्यश्री के रेट्स भी फिक्स हुए, बहुत पुराने हैं। प्लीज आप नए कार्ड दीजिए। ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, यू माइट बी अवेयर ऑफ दिस कि द गवर्नमेंट हैड कॉल्ड फॉर एन एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ न्यू राशन कार्ड्स, but so many applications have been rejected. So now the question arises that if I don't have a ration card, whether a pink or a white, how would I avail a health services? ये गरीबों का फायदा होगा, हुकूमत को नेक नामी आएगी। अच्छे से आप कर रहे हैं, आयुष्मान भारत को भी आप इसमें लाए हैं। मेरी आपसे फिर से अपील है कि आप नए आरोग्यश्री कार्ड्स दीजिए, ऐलान करिए कि द वंस हु डू नॉट हैव आरोग्यश्री कार्ड्स कैन अप्लाई, और यह ऐलान करिए कि द वन हु डू नॉट हैव एन आरोग्यश्री कार्ड विल बी ट्रीटेड इन आयुष्मान भारत। एटलीस्ट कुछ तो आप उनको एक चीज दीजिए, बिकॉज बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास आरोग्यश्री कार्ड नहीं होने की वजह से दे आर सफरिंग सर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई वुड लाइक टू वंस अगेन कम ऑन रिकॉर्ड एंड से दैट द सीसीयू चार्जेस नीड्स टू बी रीलुक्ड इनटू सर। सीसीयू के जो चार्जेस आरोग्यश्री में है बहुत कम है सर, बहुत कम है। एक दिन में वेंटिलेटर चार्जेस, बाईपास चार्जेस, और उसके बाद नर्सिंग चार्जेस, डॉक्टर चार्जेस और ऑक्सीजन, ये सारे चार्जेस को निकाल लेते हैं तो सर कई दवाखाने 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख तक भी लेते हैं, लेकिन आरोग्यश्री में सिर्फ 4,000 रुपए दिए जाते हैं। इसमें नहीं होगा। What is happening is that many hospitals are refusing critically ill patients, and they are being asked and forced to make a payment. So kindly look into it, sir. It is very important, and I hope that the government will look into the points which I have raised. And going further ahead on youth and employment, Honorable Speaker, sir, Chief Minister Saab had announced that 80,039 vacancies will be filled up through direct recruitment, and services of 11,103 outsourcing and contract employees will be regularized in all the departments in a time-bound manner, sir. Sir, ये ऐलान तो हुआ है. I don't know whether if I am right or wrong. चीफ मिनिस्टर साहब ने 11,000 आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को रेगुलराइज करेंगे बोल रहे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट रेगुलर या दूसरे जुमरे में जो आते हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं है, उनकी तादाद, हो सकता है मैं गलत हूं, उनकी तादाद 2 लाख से ज्यादा है. तो आप अगर खाली इनको करेंगे तो विच आर द डिपार्टमेंट्स वेयर यू आर गोइंग टू रेगुलराइज द सर्विसेज ऑफ आउटसोर्सिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज? ये क्लियर आप अपने जवाब में बताइएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी डू नॉट नो
We welcome the decision, but at the same time we want to know how many employees do we have in the state who are working as outsourcing, who are working as contract, or who are working as irregular or whatever it is, जो कुछ भी है. तो आप वो इसकी फेरिस्त दीजिए. Sir, however, nothing is known about the fate of unemployment allowance for the jobless. The TRS government in the manifesto has announced that they would give 3,016 rupees per month. जो नौजवान जो बेरोजगार रहेगा, तो उस ताल्लुक से कुछ नहीं कहा गया. मैं उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहब उस ताल्लुक से भी कुछ कहेंगे. और एंड ऑल्सो sir, I may recall that in 2019 and 20 vote on account budget and allocation of rupees 1,810 crores were made for unemployment doles, but no provision was made in the 2019 and 20 full budget and subsequent budgets of 2021 and 21-22, sir. Sir, as per my information, I might be wrong. There are about 10 lakh jobless youth registered with the employment exchange in the state. 10 lakhs, sir. 10 lakh youth are there. Also, another 25 lakh educated youth have registered themselves with the Telangana State Public Service Commission as part of one-time e-registration facility. I do know this. The government cannot provide employment to one and all, but the government creates an infrastructure and government brings in multinational companies, IT companies and other companies which also generates employment. But at the same time, Honorable Panel Speaker, sir, through you, I would like to make an appeal to the people of state of Telangana. Kindly do not bring in hurdles in this recruitment. What happens always is that government come forward for a recruitment and someone goes to the court and stop this recruitment process. There are many hurdles which comes across. That is why the recruitment is getting stalled. At the same time, sir, I would like to make an appeal to the all government employees. One appeal to them कि सरकारी नौकरी के लिए आप बड़ी कोशिश करते हैं, एहतजाज करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, एग्जाम लिखते हैं, पास करते हैं, सरकारी नौकरी हासिल करते हैं, लेकिन नौकरी हासिल करने के बाद आप अपनी जिम्मेदारी के साथ मुकम्मल इंसाफ नहीं करते, मुकम्मल इंसाफ नहीं करते. All the government employees should realize the responsibility and work to the 100% capability, 100% commitment and 100% betterment of the department. अगर सरकारी मुलाजिमीन अच्छा काम करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नौकरी के लिए जिद्दोजहद जरूर करते हैं, नौकरी मिलने के बाद हर कोई अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर लेता है. तो मैं अपील करूंगा सरकारी मुलाजिमीन से, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे सरकारी मुलाजिमीन काम नहीं करते, नहीं, बहुत सारे करते हैं. जो थोड़े बहुत जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि जिम्मेदारी को निभाइए. सर, गोइंग फर्दर एड, सर, I would request the Labor and Employment Minister साहब to tell us when this scheme would be launched. ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो भत्ता देंगे बोले उसके ताल्लुक से. And Honorable Panel Speaker, sir, through you, sir, about employment, sports and employment, sir. Sir, I had given several representations, sir. Several representation in 2018, 2019, 2020, 2021, and again in 2021, once again I've given financial assistance and encouragement to Mr. M. Praveen Kumar, 9th WOCA World Cup kickboxing, sir. He got a gold medal in world competition. He hails from Old City, from my constituency. कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए बार बार रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन अब तक नहीं हुआ. मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर हुकूमत इस पर भी गौर करेगी. और सर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी conducts an annual summer coaching camps in rural and urban areas.
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना, सर मैं आपके जरिए रिक्वेस्ट करूंगा कि पुराने शहर में भी ऐसे कैंप्स, समर कोचिंग कैंप्स रखिए सर। और फिर सर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस हैं, एक स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन हकीमपेट में है, स्पोर्ट्स स्कूल आदिलाबाद में, करीमनगर, वरंगल, और एकेडमी ऑफ साइकिलिंग, बॉयज एथलेटिक एकेडमी खम्मम, और फिर वनपर्ती, सरूनगर। मैं ये कहूंगा साउथ ऑफ हैदराबाद में भी ऐसा एक स्कूल डालिए सर। अगर ओल्ड सिटी में अगर कहीं जगह नहीं है तो साउथ ऑफ हैदराबाद महेश्वरम में मैडम सबिता इंद्राटी साहिबा के एरिया में, फैब सिटी में इतना बड़ा जमीन दिए हैं, एक 4-5 एकड़ उसमें से निकाल कर दे दीजिए, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट भी हो सकता है साहब। हम दे सकते हैं अगर चाहें तो। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड आई नो दैट अगर हुकूमत तय कर ले कि हां हम पुराने शहर में भी एक ऐसा स्कूल, तेलंगाना स्टेट स्पोर्ट्स स्कूल जैसा हकीमपेट में है या दूसरे वनपर्ती में दूसरी जगह पर है, हम ओल्ड सिटी में भी लाएंगे, तो जरूर मैं समझता हूं कि वो भी मुमकिन होगा। यह भी वादा किया गया था कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में स्पोर्ट्स स्टेडियम, बल्लागुड़े में स्टेडियम पेंडिंग है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो स्टेडियम का काम जल्दी कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ ही साथ यूथ सर्विसेज में हम जब आगे जाते हैं, ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, तेलंगाना स्टेट सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग अनएम्प्लॉयमेंट प्रमोशन, सर इसमें तेलंगाना स्टेट सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन हैज एस्टैब्लिश्ड 7 skill development centers in the following districts. 7. One is Mahbubnagar, the second is Khammam, Yadrigutta is 3, Karimnagar is 4, 5 is Warangal, 6 is Devar, Yamjal, Medchal, Malkajgiri district, and 7th is Adilabad. सर इसमें हैदराबाद भी डालिए। एक ये स्किल डेवलपमेंट के लिए हम बार बार कह रहे हैं सर, वी हैव अ नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी। सर वहां पे नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन में वी कैन एस्टैब्लिश, देयर इज एन ओपन लैंड, गवर्नमेंट कैन सैंक्शन फंड्स फॉर अ कंस्ट्रक्शन कैन बी ट्रेनिंग अप, टेकन अप for this center for training employment promotion. We can have one center there, NAC, National Academy of Construction. बहुत सारे बेरोजगार बच्चे हैं पुराने शहर में भी, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी बच्चियां हैं, and the programs which are conducted sir in this center in Mahbubnagar, Khammam, in Karimnagar and all, the first course is fashion designing. सर ओल्ड सिटी में भी है लड़कियां फैशन डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं। वाई कांट वी हैव वन ब्रांच ऑफ निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इन ओल्ड सिटी ऑल्सो? वी नीड टू ब्रिंग सच, एंड ऑनरेबल मिनिस्टर साहब हैड अ मीटिंग। आई थैंक केटीआर साहब फॉर मलकपेट में आईटी टावर आप ला रहे हैं। सर वो आईटी टावर जो आप ला रहे हैं ऑलमोस्ट 1 million से ज्यादा स्क्वायर फीट वहां पे आ रहा है। आई थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, इट वॉज अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड। सर उसी में थोड़ा सा अगर आप सही समझते हैं तो निफ्ट को भी आप एक दे सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी को भी कुछ स्पेस देकर उनका एक ब्रांच वहां पर भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। सर इसमें देखिए आप कि फैशन डिजाइनिंग, एडवांस फैशन डिजाइनिंग, जरदोजी वर्क। सर जरदोजी एंड कारचोप वर्क इज द फेमस वर्क ऑफ ओल्ड सिटी, लेकिन ये जरदोजी और ये कारचोप के काम के लिए कोई सेंटर नहीं है। सर ब्यूटिशियन का सेंटर है, एडवांस ब्यूटिशियन है। सर ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, एमएस ऑफिस, डीटीपी, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिशियन, मोबाइल सर्विसिंग, सीसीटीवी कैमरा। सर फॉर दिस सर आई वुड लाइक टू कम फॉरवर्ड, अगर आप ये सेंटर डालना चाहते हैं, I will give a space in my schools which I run free. I will give you the required space. There we can start these centers till the new building comes up or a new place is being given. Sir, NAC ka center also we started the same way. When I demanded, when the Congress was there in power, to establish a NAC center in Old City, they said we don't have a building. I gave my school building, and without taking 1 paisa rent, the NAC center used to run in my school which I run, free for 2 years till the building was complete. So the same way we can do something for the old city youth, sir.
कि इसमें इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बिंग हो, नैक को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत मेरे इन बातों पे संजीदगी से गौर करेगी। एंड गोइंग टू द टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर, सर, द तेलंगाना स्टेट historically has a variety of attraction including mountains, hills, wildlife, forests, fort and temples and dargahs. Telangana region has a rich culture, heritage and is known for its rich history, architecture, culture. This region has all required qualities for emerging as a tourist destination in India. Therefore, the government has been trying to develop basic infrastructure. I would request that, please speed up the works of Charminar pedestrianization. Speed up the work which have been taken up at Holy Qutub Shah tombs. Speed up the work. With this, we can improve. Now, once again, I would like to say, Aga Khan Foundation is doing a wonderful work by restoring the Holy Qutub Shah tombs. Now, they have agreed to take up the Paiga tombs also in Old City. I thank them and I request the Honorable Tourism Minister to please try to complete the Charminar pedestrianization, the Holy Qutub Shahi tomb, the Paiga tomb, the Falaknuma Palace we have a Chowmailla, that Lad Bazaar stretch work needs to be completed soon, and the palace and Golconda Fort. We also have Khammam Fort, Warangal Fort, Bhongir Fort. Religious tourism like Ramappa Temple, Bhadrachalam, Alampur, Jogur, Lamba Temple, Medak Church, Kesara Temple, Basra, 1000 Pillar Temple and Yadrigutta Temple also. Sir, at the same time we have Jahangir Pira Dargah. Jahangir Pira Dargah, Honorable Chief Minister Sahab had announced that he is going to develop the Jahangir Pira. Honorable Chief Minister Sahab had also promised that Yusuf Baba, Sharif Baba Dargah will also be taken up. I would request the government to please prepare a plan at least for the development of Dargah. यूसुफ बाबा, शरीफ बाबा की दरगाह के अतराफ का भी एरिया को डेवलप करने का लीजिए। बड़े पहाड़ की दरगाह निजामाबाद में है, तो इस दरगाह का भी हम एक टूरिज्म का पैकेज बना सकते हैं, मंदिरों का भी बना सकते हैं। तो हम एंड वी ऑल्सो हैव द फॉरेस्ट ऑल्सो एंड रिक्रिएशन टूरिज्म लाइक नेहरू जोलॉजिकल पार्क, तो नगारम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागार्जुना, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व एंड पोचाराम सेंचुरी। सर, द नेचुरल टूरिज्म लाइक कुंटाला वाटरफॉल, Pochera waterfall, Laknavaram, Bogota waterfall, Maleha, Theram waterfall and Anandgiri Hills. We have so much with which we can improve, and I hope that in this tourism, the important places and points which I have mentioned, the government would take these up. And finally, sir, going on municipal corporation, sir, I would like to thank the Honorable Minister for Municipal Administration for taking up lots of work in Old City. In last sitting, he had given the details by mentioning that 14,500 crore worth has been taken up in Old City. There are many other works which needs to be taken up. We have submitted a list of all the works which needs to be taken up, and I'm sure that the government would sanction those works also. But sir, the most important request through you which I want to make to the Honorable Minister Sahab, K.T. Ramarao Sahab, is about the road widenings of Old City. Sir, we have taken up lot of Nala development projects. We have taken up sewerage. We have taken up water. We have taken up overhead reservoirs. We have taken up flyovers. I thank you very much for that. But sir, the road widening is very important. Alternate road and parallel road. And I would like to just bring to the kind notice of the government is that for the road widening, we have given proposals. Like in my constituency, there are 4 roads which needs to be widened. And there is one road which is yet to be completed, and that is the most important road, I would say, the Owaisi Hospital Junction till Chandrayan Gutta crossing. It's a very important road. So road has been widened, but few pockets have been left, which needs to be taken up. And whenever we make a representation to GHMC, they say, sir, we do not have fund. Sir, through you, I request the government and Honorable Chief Minister Saab and also Minister for Municipal Administration, kindly 100-200 करोड़ अगर आप पुराने शहर को रोड वाइंडिंग के लिए अगर दे देते हैं तो हमारे पूरे रोड वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएंगे साहब.
We have prepared a plan. I thank the Principal Secretary Arvind Saab also. He was kind enough to come along with us, with myself, with my party president and Honorable MP Akbaruddin Owaisi Saab. We always go, we knock his door, we give a representation, and he's kind enough to come and inspect and give the required sanctions and send the files to the Honorable Minister Saab. I thank them. But road widening के बहुत सारे पेंडिंग है, पुराने शहर के रोड वाइडनिंग, इसको टेकअप करने के लिए बोलिए. हाफिज बाबा नगर में 2 रोड्स हैं जो लेना है, बल्लागुड़े की रोड है जो लेना है, ओल्ड सिरिसेलम की रोड है जो 10 साल से पेंडिंग है, लेना है. और फिर आपको और एक रोड लेना है जो एमपी साहब हमारे दिए थे, जो पूरे चार मीनार और बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जाती है, वो रोड भी वैसी पेंडिंग है. नामपल्ली के पास रोड पेंडिंग है. और फिर कई फ्लाईओवर्स के हैं. मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि चंद्रायन गुट्टे में 2 फ्लाईओवर्स लेने के लिए, एक हाफिज बाबा नगर के पास, जंक्शन के पास, और मिनिस्टर साहब ने कहा कि उसको सेकेंड फेज में ले लेंगे. मैं उम्मीद करता हूं कि आप सेकेंड फेज में उसको भी लेंगे, मूसी को भी आप लेंगे. और लेक डेवलपमेंट के लिए हमारे पास एक सुरम चेरू, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक तालाब है, उसके डेवलपमेंट के लिए एक प्रपोजल बनाया गया 21 करोड़ का. ठीक है, 21 नहीं, एक 5-10 करोड़ रुपए ही आप दे दीजिए, हम उस लेक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ब्यूटिफाई कर सकते हैं. बालापुर का तालाब है, उसके लिए भी हमने दिया है. उम्मीद करते हैं कि आप वो भी लेंगे. एंड ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, एट द सेम टाइम सर, वी हैव बीन डिमांडिंग एंड रिक्वेस्टिंग फॉर द मेट्रो to come to Old City. I thank the Honorable Chief Minister Saab for fulfilling his promise, and I thank Honorable Minister for Municipal Mr. K.T. Ramarao Sahab, and I thank the government for allocating funds for Old City metro train, sir. हमको उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द मेट्रो हमारे पुराने शहर में भी दौड़ेगी, और फेज वाइज जो रोड वाइडनिंग करना है वो भी करेंगे. हमको उम्मीद है कि मूसी भी साफ होगी. हमको उम्मीद है कि पुराने शहर में भी तालाबों को बेहतर किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा, लेक्स को ब्यूटिफाई किया जाएगा, रोड वाइडनिंग्स होंगे. एट द सेम टाइम सर, मैं केटीआर साहब के नजर में एक बात लाना चाहता हूं, वो ये है कि जीएचएमसी का बजट अब तक मंजूर नहीं करे. आई डोंट नो व्हाट इज इट, क्योंकि रूल्स के हिसाब से, एज पर द रूल्स, the GHMC draft budget should have been tabled before the standing committee on or before November 10, 2021 and placed before the general body for discussion and approval in the second week of January 2022, sir. लेकिन अभी नहीं हुआ है, कुछ वजह होगी, तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि GHMC के बजट को भी मंजूर करिए, और वहां के जो मंजूरी स्टेट गवर्नमेंट को जो जाती है कैबिनेट को, वहां से फिर मंजूर होने के बाद जीएचएमसी का इजलास भी बुलाइए. हम देख रहे हैं कि हैदराबाद तरक्की कर रहा है, पुराना शहर ही नहीं, नया शहर भी तरक्की कर रहा है. हम देख रहे हैं कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन काम ले रही है, एसटीपीज ले रहे हैं, पानी हर घर को पहुंचाने का फ्री पानी भी दिया जा रहा है फ्लैट ओनर्स को, और फिर ड्रेनेज लाइंस को भी किया जा रहा है. बारिश से लड़ने के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं. और यह तरक्की सिर्फ हैदराबाद में नहीं, बल्कि यह तरक्की पूरे रियासत में आ रही है, जिसके लिए मैं रियासती हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं कि हमारे पास एक हरकियाती मिनिस्टर है और सारा स्टाफ है. कोशिश हो रही है कि जिस तरीके से हैदराबाद डेवलप हो रहा है, दूसरे करीमनगर भी डेवलप हो, निजामाबाद भी डेवलप हो, कामारेड्डी भी डेवलप हो, और कोशिश है कि नलगुंडा भी डेवलप हो, खम्मम भी डेवलप हो, आदिलाबाद भी डेवलप हो, वरंगल भी हो. हर जगह पर तरक्की हो रही है. और आज हम देखते हैं कि आईटी के सेक्टर में हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए भी मैं काबिले मुबारकबाद है. हमारी रियासती हुकूमत में मुबारकबादी देता हूं. और हम जब जाके देखते हैं कि जिस तरीके से हमारा सिटी एक्सपैंड हो रहा है, चाहे वो एलबी नगर के तरफ हो, चाहे वो महेश्वरम के तरफ हो, चाहे वो हाईटेक सिटी के तरफ हो, चाहे वो कोमपल्ली के तरफ हो, शहर के अतराफ शहर फैल रहा है. खुली कुतुब शाह ने जब हैदराबाद को बसाया था तो यह दुआ की थी कि मेरे शहर को इतना आबाद कर कि जिस तरीके से एक तालाब में मछलियां होती हैं, और आज वो शहर उसी तरीके से फैल रहा है. और हम तरक्की के साथ, कामयाबी के साथ आगे बढ़ेंगे,
फिरका परस्त ताकतों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। वो लोग जो मजहब के बुनियाद पर तरक्की में रुकावट बनना चाहते हैं, हम उनको आगे बढ़ने नहीं देंगे। हम कामयाब थे और आगे भी कामयाब होंगे अपनी तरक्याती सरगर्मियों के साथ, हमारी तरक्की के साथ, हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर चलने के साथ हम सबको साथ लेकर चलेंगे। और आखिर में मैं फिर से हुकूमत का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मजलिस के मुतालबे पर लाल दरवाजे की मंदिर का काम के लिए 20 करोड़ की चीफ मिनिस्टर साहब ने मंजूरी दी है। उम्मीद करता हूं कि वह काम जल्दी ले लिया जाएगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि और एक मंदिर में कल्याण मंडपम के लिए भी, उपगुड़ा में कंदिकल गेट में भी मंदिर के लिए हमारे रिप्रेजेंटेशन पर हुकूमत ने मंजूरी दी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबकी आवाज है। मजलिस और अकबर ओवैसी मुसलमान के भी लड़ता है, हिंदू के लिए भी लड़ता है, सिख के लिए भी लड़ेगा, ईसाई के लिए भी लड़ेगा, हर मजलूम के लिए लड़ेगा। और मुझे उम्मीद है और मैं जानता हूं कि हमारा चीफ मिनिस्टर भी हर गरीब के लिए लड़ता है, हर मजलूम के लिए लड़ता है और हर किसी को एक नजर से देखता है। हम सब मिलकर इस स्टेट को बंगारू तेलंगाना बनाएंगे, फिरका परस्तों को शिकस्त देंगे। आपने जो मुझे मौका दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।